दोस्तों, मैं विक्रम प्रसाद बलियावाला अमेरिका से बोल रहा हूं। देखिए, ये वीडियो जो हम आपको दिखा रहे हैं ये मेरी सही कहानी है। जब मैं पीएचडी किए हुए था और लेबोरेटरी में लैब में काम कर रहे थे, हम ब्लड का टेस्ट करते हुए, फिर मेरे को जब जॉब मिला एक हॉस्पिटल में माइक्रोबायोलॉजिस्ट काम करने के लिए, तो वहाँ मेरे को ब्लड ड्रा करना पड़ता था। सभी टेक्नीशियन को करना पड़ता था सुबह में जा कर के। तो उसमें एक ट्रे होता है जिसको कहते हैं फ्लेबोटमी ट्रे या ब्लड ड्राइंग ट्रे, जिसमें बहुत से कलर के ट्यूब्स होते हैं। उसमें नीडल्स होते हैं, गाज होते हैं, बैंडेड होते हैं और सिरिंज होता है। तो बहुत से सामान होते हैं जो आप देखिएगा एक ट्रे में। और जब हम जाते थे सुबह में तो पेशेंट मेरे को कहते थे कि ये वैम्पायर आ गए लैब वाले, और लेकिन हम लोगों का वो काम था करना। तो जब हम काम करने लगे तो एक साल के बाद करीब मेरे को बहुत इंटरेस्ट आया कि मैं भी डॉक्टर बनूं, लेकिन उसका सारा श्रेय जो है उस ट्रे को जाता है, जिसको कि हम इंग्लिश में भी बात किए हैं, जो कि इंग्लिश स्पीकिंग भाई हैं। इसमें हम ये कहना चाहते हैं कि देखिए, आप यंग आदमी हैं तो जो भी आपको चांस मिले अच्छा करियर में बढ़ने के लिए, तो उसमें आप करें और उसमें आपको मोटिवेशन मिलेगा, जैसे कि मुझे मिला। तो मैं चाहूँगा कि आप पूरे वीडियो को देखें और इंग्लिश पार्ट भी देखें, ताकि ये समझें कि कभी भी गिव अप लाइफ में न करें। दूसरा, जो आपको अगर आगे बढ़ना है, यंग आदमी हैं, तो आप जरूर ही उस लाइन में काम करें। आपको पता नहीं है, बहुत सी नर्सेज जो हैं टेक्नीशियन का काम करती थी या नर्स असिस्टेंट का काम करती थी, बाद में वो कॉलेज भी जाती थी, पढ़ती थी और नर्स बन गई, और नर्स बनने के बाद फिर वो डॉक्टर भी बन गई, क्योंकि वो पढ़ने के लिए चली गई बाद में ट्रेनिंग लेने के लिए। तो ये बहुत ज़रूरी है आपको समझना कि एक के बाद एक हाई ट्रेनिंग लेना बहुत ज़रूरी है। और जब आप अच्छे लाइन में काम करते हैं तो बहुत मोटिवेशन मिलता है। मेरे को जीवन में बहुत से मोटिवेशंस मिली हैं, जिसमें एक ये है जिसके वजह से हम डॉक्टर बने। और दूसरा जो मोटिवेशन वाला बात था, जिसको कि हम पूरा नहीं बताए हैं कि हम कैसे अमेरिका आए, हम बताए हैं थोड़ा सा कि हम पढ़ने के लिए आए, क्योंकि हम उस वक्त अपने मास्टर्स लेवल पर माइट के ऊपर काम कर रहे थे। तो याद रखिएगा, जीवन में ये जो मोटिवेशन के सोर्सेस बहुत ज़रूरी हैं। मोटिवेशन आपको अपने पत्नी से मिल सकता है, भाई बहन से मिल सकता है, दोस्तों से मिल सकता है, सोसाइटी से मिल सकता है, और आप जो हैं यूट्यूब के बहुत से ऐसे हैं मोटिवेशनल चैनल जो कि आपको बताएंगे अपने जीवन के बारे में। तो ये बस मेरा यही कहना है कि आपको आगे बढ़ने के लिए बड़े चांसेस है लाइफ में। तो आप इस वीडियो को देखें और जो है मोटिवेशन के लिए जरूर ही कोई न कोई सोर्स रखें, और उसी के बदले आप आगे बढ़ें, बहुत अधिक से अधिक पढ़ें। तो यही है इसका मूल कि काम करके सीखना और आगे अधिक से अधिक बढ़ना। तो मैं यही सोच छोड़ूंगा। प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्कार फ्रेंड्स, this is Vikram Prasad Baliawala in the USA or America. In this video, I am going to talk about how a blood drawing tray changed my life and encouraged me, motivated me to become a physician, which I did. And later I carried my medical life for many, many years and retired only about 10-12 years ago. This is July 2023.
why this blood draw tray is important for many people, because many technicians who enter in line of medical technologist, the first thing they have to learn is to draw the blood from the patient. And I used to draw early in the morning in a hospital where I was working, and they used to call us a vampire. You know, patients used to call us vampire, because if we had to go early in the morning, around 5 o'clock, plus minus, half an hour, we had to draw the blood, bring it in the laboratory, and where the testing was going to be done. So the results had to be out as soon as possible. So many people, young people, are looking some very straightforward career. In my case, that didn't happen, because I had done my PhD, and I had known quite a bit in microbiology and parasitology. So I had learned about the testing, how it is done, including microbial cultures. So this blood drawing tray, when I saw in a doctor's office when I went to have my blood drawn, I couldn't forget not to tell this story to the young people, that you should accept any job that is possible, provided it is in your line. In other words, if I want to enter in a medical line, and if I want to work as a gardener, cutting the lawn, and that's not going to help me. So I would suggest that first choose a career and start working, getting training for your motivation. To me, this biological tray, or we call laboratory tray or blood drawing tray, was something I never forgot, because this is the one that had motivated me to become the physician, which I did later. And after working for about 2 years, I left and went in medical school, and the rest became the history that I will discuss some other time. Here, only thing I want to emphasize to young people or viewers, that try to select a line of work in which you want to pursue your career or life, and that may lead to a better future. So here I'll leave it, and I will show that tray, not actual mine, but that is the one that encouraged me to do this motivational video for you. So again, I will say, in life, you keep going for your any training, internship you may not like initially. And, I have told you one story in another video last year in 2022, the story of Mr. Jordan, under whom I had learned to become a medical technician doing the lab test. And one day I had gotten angry because they were trying to ask me to clean the desk when there was no work. And Mr. Jordan had told me, "Young man, this is not the way. Have you found a job?" And I said, "No." And he said, "You are a fool. In America, nobody quits a job unless he has a job." So anyway, I would suggest you watch that nice video that made me to work for a year in his lab. Then I went to the hospital to work as a microbiologist in the Metropolitan Hospital in Detroit. And after that, rest
became the history. I still have my physician's coat, which I don't wear, but today for the video I wore so that I can show my name still written, you know, Vikram Prasad, MD. So I will stop here, and again I will emphasize, never give up. Keep learning more and more, and keep getting the highest education and training possible. Thank you. Please subscribe, share, comment to my video. This is Vikram Prasad, Baliawala in the USA. Thanks. Bye-bye.